Hello everyone, welcome to Indothai News Channel. Today with us we have a very special personality who has recently started out in the music industry. Professionally, he is in the real estate business along with import and export businesses. However, his passion and dedication towards music and language has brought him in the music industry. He's joined this industry to make a positive impact in the society and also to bring forth the importance and significance of learning cultural languages to the younger generation. So let us all welcome this exclusive figure on our platform. He is none other than Mr. Shiv Anand Dubey. थैंक यू सो मच संजना जी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और आपके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे यहां पर आमंत्रित किया। थैंक यू We सो are मच। very glad to have you here as well. Thank you so So much. as we progress with the interview, I have a question for you. So before we move on, could you please briefly introduce yourself to our audience? या श्योर जी, मेरा नाम शिव आनंद दुबे है। मैं भारत के दिल्ली क्षेत्र का निवासी हूं और मूलतः मैं गोरखपुर क्षेत्र को बिलोंग करता हूं और दिल्ली के अंदर मेरा लगभग 18 साल का व्यावसायिक जीवन रहा है और आज की डेट में आई एम इनटू एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड सम रियल एस्टेट बिजनेस आई एम डूइंग राइट नाउ एंड दैट्स अबाउट मी एंड व्हिच इज़ व्हाई आई एम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। थैंक यू सो मच। Okay. So you told me that you're in the business industry and real estate and import export. So what made you incline towards the music industry? Well, actually, music was always my first love, if I could say that. And ever since the childhood, हम लोग हमेशा जब भी पहले हमारे समय में बचपन में बहुत सारी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, इंटरनेट नहीं था उतना, केबल टीवी टेलीविज़न वगैरह उतना नहीं आता था। तो आई एम श्योर जो मेरी उम्र के लोग हैं या मुझसे जो सीनियर है वो इस बात को रिलेट कर पाते होंगे कि हफ्ते में 2 बार जो है चित्रहार नाम से एक कार्यक्रम आता था जिसके अंदर हिंदी के कुछ पुराने गाने वगैरह सुनाए जाते थे। तो बुधवार और शुक्रवार मुझे समय भी याद है, तो हम लोग बस उसका इंतज़ार करते थे पूरे हफ्ते। तो वहीं से बस कहीं ना कहीं एक म्यूज़िक जो है एज एक बहुत अच्छा एक डेवलप होने लग गया कि म्यूज़िक के प्रति रुझान थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप होने लग गया और जिसकी वजह से आज थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ प्रयास हम इस फील्ड में भी कर रहे हैं। Okay, so you told me that you're trying out something in the music industry as well. And what exactly is the genre that interests you when it comes to the music industry? Because there's a lot of type and a lot of people enjoy listening to music. So what kind of genre are you into? Well, that's a kind of a tricky question for me because as far as genre is concerned, I kind of listen to every genre of music and precisely Hindi and English too. Like if I talk about, I sometimes listen to jazz, I sometimes listen to blues, I sometimes listen to ghazals, sometimes some melodious Bollywood So music. it's a mix of everything. Yeah, absolutely, yeah. And what my precise aim is, why I kind of I'm trying a bit in this particular industry is because I really want to ensure that the regional languages and the regional cultures which are not given their due attention, I am trying to work in that particular field that हम एक अपने प्रादेशिक साहित्य को या लोक भाषाओं को या अपने कल्चर को भी संगीत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें जिसकी वजह से ये सभ्यताएं आने वाले समय तक भी जीवित रहें। Okay, so it's like making music to promote Hindi language and other kind of languages that is present in India, or what kind of languages is? Yeah, actually, as you know that we have many Languages in India, languages, many yes. dialects as far as India is concerned. So, what my main focus is working towards the regional languages, Okay. wherein like they are not given the kind of attention they certainly deserve. Because इतना समृद्धशाली जो है भारत का कल्चर है, किसी भी आप प्रदेश की बात करें, जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, हर प्रदेश के साहित्य में कुछ ना कुछ खजाना छुपा हुआ है जो अगर आप ढूंढने को निकलेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देगा, आपके समाज को देगा। तो इसी वजह से मेरा थोड़ा सा रुझान जो है लोक साहित्य की तरफ है, लोक भाषाओं की तरफ है और उसी के लिए हम लोग जो है प्रयत्नशील हैं। Okay, that is really nice because these days what is the situation? People, they shy away to speak their mother tongue or to speak their regional language, as you say, and they are not getting as much attention. So what do you have to say to those people who are shy? Because I've heard like a lot of people here in Thailand as well, when they have to communicate, they prefer speaking in English rather than speaking in Hindi, or even if they are communicating in Hindi, they avoid to speak
their regional language. Like you told me you are from Gorakhpur, right? So I've heard a lot of cases where people over here, they're very shy to speak their Bhojpuri language. So what is the message that you'd like to share to those people who shy away? They're not ashamed, I think, but they shy away. So what do you have to say to them? Well, we need to understand that there are there is some pedigree which we kind of pass on to the other generation to generation. So the mother tongue which you have born in, uh, it is kind of a root of a tree. सो ये एक जड़ है जिसके बिना हम लोगों का गुजारा नहीं है। हम लोगों को इस चीज़ के अंदर किसी भी तरीके से शाइनेस या किसी भी तरीके के शर्म का जो आवरण हम लोगों ने अपने चेहरे पर ओढ़ा हुआ है, इसको हटा देना चाहिए। लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेटिंग। आप इंग्लिश में बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा सुझाव आने वाली जनरेशन को और अभी की जो प्रेजेंट यंग जनरेशन है उनको ज़रूर कहूँगा कि आप अंग्रेज़ी ज़रूर सीखें, इंग्लिश में ज़रूर वार्तालाप करें, लेकिन जो भी आपकी प्रादेशिक भाषा है उसका ज़रूर कुछ ना कुछ प्रैक्टिस घर पे किया करें। घर में कोशिश करें माँ बाप से उसी भाषा में बात करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी आप ये चीज़ एक धरोहर के रूप में दे पाएँ। Because it's our tradition, so we Yes. have to pass it on to our generation. Because Absolutely, yeah. if we don't do it, then who is going to do it for us? Who will, yeah. That is very good thought that you have. So as we move on with the main motive of our interview, I was mentioned that you are going to release a song. So what kind of song it is, and could you tell more about the product that you are working for? Absolutely. So right now we are about to release Bhojpuri bhajan. We can call it a devotional song. और ये भजन जो है हमारे बहुत ही अच्छे उभरते हुए कलाकार हैं अमित उपाध्याय, जो कि आरा बिहार से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने अपनी जो है मधुर आवाज़ इसको दी है, और इसको लिखा है धर्मेंद्र बाग जी ने। इसमें संगीत दिया है उत्तम सिंह जी ने, और हमारे अमित सागर जी जो प्रिय भाई हैं, उत्तराखंड के लोक साहित्य और परंपरा के जो ध्वजारोही हैं, वो अमित सागर जी ने इसके अंदर अपना निर्देशन दिया है। मैं एक छोटा सा एक निर्माता की भूमिका इसके अंदर निभा रहा हूँ। It takes a team to build everything. Absolutely. So any product which you come across in life, there is like immense Hard work. there is immense hard work of the entire team. Like people give their time, energy, and they sweat it out. Then only a product is launched at the end of the day. So बहुत पूरी टीम ने, क्रैप बाबा जो कि हमारे इसमें DOP हैं, उन्होंने भी बहुत अपना अथक प्रयास किया है। तो ये एक भजन हम लोगों ने बनाया है समाज के लिए, ताकि हम एक अच्छी सीख, अच्छे संस्कार, अच्छी सभ्यता जो है आजकल की जनरेशन को, जो कि शायद इससे थोड़ा सा विमुख हो रही है, दूर हो रही है, उसको हम एक अच्छी सभ्यता और संस्कार दे पाएँ कि ये हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, और आपको इसको जीवित रखना है। Okay, so are you saying, like, because you told me that this devotional song is catered to new generation, so are you saying that your target listeners for this devotional song is the young generation, or how do you think they're going to react when they listen to devotional songs these days? Well, as far as my target audience is concerned, I really want it to be targeted across the ages. So even from a toddler till somebody who is like aged, who has aged over a period of time. So my target audience is entire family. Okay. So why? Because whatever we are trying to convey by the medium of music, by the medium of lyrics, or maybe by enacting on the screen, we just want to imbibe the good culture amongst the audiences. Okay. We just want to ensure that how a good family is knit together, and how people should live, and how people should respect their elders and give love and affection to the youngers. So this is what we are trying to do. We are trying to create a bond between the elders as well as the younger generation. Because there is a lot of gap coming up. Absolutely. And just because of this mobile and internet, which has been like a kind of a revolution in the past 10 to 20 years, yes, it has been a boon for us. However, it is it is creating a kind of a gap between the older and the younger generation, because you would find most of the times younger people are sitting in the family dinners and all, but they are still focused towards their mobile. They are checking their Facebook, WhatsApp. Everything is fine. I'm not against the evolution, but you need to ensure that whatever roots you belong to,
you need to have a hold sort of on to connection. that as well. Yeah. That is very true. Like we always need to find something that we can connect with our family, our society, and then it's even more important when we are in a foreign land and we don't have a lot of resources through which we all can feel one. So it's a very good initiative that you and your team has taken up to create this kind of music. And I have one question before we come towards the end of our interview. This is something very interesting that I've come across these days. So when I listen to bhajan myself, when I think of it, what my parents used to listen, you know, like the old traditional type, it does not entertain me anymore. But then I'm seeing like same bhajan but with different kind of beats, different kind of music that's more popular to people like us. So what are your thoughts in revolutionizing the kind of bhajans that you people are making or will be making in the future? Well, that's a pretty good question, that how we are gonna stay put or stay connected with the younger generation if we are talking about bhajan or religious songs for that matter. इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी भी भजन को हम एक स्टोरी के साथ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जब आप उसको देखना प्रारंभ करें तो एक झटके से ऐसा ना हो कि नहीं शायद ये भजन है, मुझे इसको स्विच ओवर कर देना चाहिए, जो कि शायद आज की डेट में A lot of people do that, yes. करते होंगे। तो हमने इसके अंदर एक स्टोरी के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जो करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। और इसके अंदर एक परिवार की एक कहानी दिखाई गई है, जिसके अंदर एक एरोगेंट जो है इंसान होता है घर के अंदर में, जो हस्बैंड है, और वो जो है थोड़ा सा अपनी चीज़ों पर कुछ घमंड करता है, अपने धन पर और अपनी योग्यता पर। तो वो घमंड और ये चीज़ें जो है आपको जीवन में हमेशा पीछे लेकर के जाएंगी। तो आपको विनम्र कैसे रहना है, लोगों का मददगार कैसे बनना है, इस तरीके का हम इसके अंदर संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। तो यंग जनरेशन को मुझे लगता है कि अगर हम किसी स्टोरी के माध्यम से और किसी एक अच्छे पैपी म्यूज़िक के माध्यम से अगर हम इनको जोड़े रखें और एक संदेश भी दें, तो शायद हो सकता है इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा। Yes, I'm sure it's going to be a lot more impactful that way, because even personally I feel that if you're just going to show me a photo of any god and play music at the back, then I'm not going to listen. But at the same time, if the same music is giving some knowledge to me and it's interesting for me to watch with some good music, then even if it is bhajan, then I feel like everybody is going to sit down and listen to what it is going on. So I wish you good luck for your project. It is going to be released very soon, right? Yeah. When are you going to release the song? So once we are done with this interview, it is being released on 21st of December, and that is today. And the best part is that we are trying to release it on an international stage, international platform here in Bangkok, Thailand, at the office of Perfect Shine Global Gems and Jewelries. And I must thank Pawan Bhai, the founder and CEO of PSG, as well as Indo-Thai News, that he gave this particular opportunity to me to come across to all of you and share the kind of thoughts and the motive behind making this bhajan. I'm sure Indo-Thai News team and all other teams are very happy to have you here as well. So before we move on and end our interview, I'd like to request you to give one small message to our viewers who will be watching you. Well, I would certainly like to give a message. एक संदेश ज़रूर देना चाहूँगा लोगों को कि कुछ एक ऋण या कुछ एक कर्ज होते हैं जिनको डेट बोला जाता है, कि आपके जीवन में कुछ एक कर्ज होते हैं जो आपको अपना जीवन समाप्त होने से पहले निपटाने का प्रयास करना चाहिए। उसमें माता का ऋण होता है, पिता का होता है, गुरु का होता है, इसी तरीके से आपके मातृभाषा के भी कुछ कर्ज होते हैं। तो ये जो हम लोगों ने ये प्रयास जो शुरू किया है, ये अपनी मातृभाषा के कर्ज को पूरा करने का एक छोटा सा प्रयास किया है, और आशा करता हूँ कि आप लोग इसके अंदर हम लोगों को प्रेरणा और थोड़ा सा मोटिवेशन देंगे, जिसकी वजह से हम लोगों को शायद इस तरीके के सार्थक प्रयास और इस तरीके के कुछ अच्छे प्रयास करने का और अवसर मिलेगा। और किसी से आप सभी को यही संदेश दूंगा कि कृपया करके जो भी आपकी मातृभाषा है उससे हिचकिचाए नहीं, उससे शर्माए नहीं। अंग्रेज़ी सिर्फ एक माध्यम है बोलने का, इसके अगर आप उसको नहीं बोल पाते हैं तो अपने आप को छोटा ना समझें। आपको गर्व तभी होगा जब आप अपनी मातृभाषा से जुड़े रहेंगे। So before we close the interview, we have a very special appearance by our CEO, Mr. Pawan Kumar Mishra, and he has something very special to say about the newly released song. He is an avid believer and promoter of cultural languages here in Thailand as well. So let us all hear a brief feedback from our CEO. Good evening to everyone, to our viewers, and to all of our brothers and sisters. So
आज जो कि वीडियो हिंदी में रिलीज़ हुई है, ये जो भजन है, तो हिंदी में बात करना ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं सबसे पहले इसके प्रोड्यूसर मिस्टर शिव आनंद दुबे जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो ऐसी चीज़ों को लेके आ रहे हैं जो कि समाज के लिए और हमारे सोशल जो नए बच्चे हैं, नए जनरेशन है, या इन लोगों के लिए ये बहुत प्रेरणा का विषय है, क्योंकि ये चलन अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। कोई भी यंग जनरेशन में इन चीज़ों को, भक्ति गानों को, या जो समाज को एक नई दिशा दे सके, ऐसी चीज़ों को लेके कमा रहे हैं। इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई, कोटि कोटि शुभकामना, क्योंकि ऐसी चीज़ों में कोई भी आजकल पैसा लगाना नहीं चाहता है। दूसरा, इसको जो गाया है वो अमित उपाध्याय जी ने गाया है, और इसके जो निर्माता हैं, जो निर्देशक हैं, वो हैं अमित सागर जी, जो कि उत्तराखंड देवभूमि से बिलोंग करते हैं। और इस गाने की सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये गाना जो बना है बड़े ही दिल से बनाया गया है, बड़े ही मतलब एक जो उनकी जो आंतरिक, वो हम इसको एक्सप्लेन करने में मैं शायद सही तरीके का सही शब्द नहीं चुन पा रहा हूँ उस चीज़ के लिए, बट उनके मन से ये निकला हुआ है। और दूसरा, जो अमित सागर जी हैं, वो देवभूमि उत्तराखंड से हैं, जो कि वास्तविक रूप में आप सबको पता है कि देवभूमि है। वहाँ से हम कहते हैं हरि का द्वार हरिद्वार है, वहाँ से ही भगवान का आगमन हमारे भारत में होता है। तो इस हिसाब से जो गाने का शूटिंग, जो बनाने का तरीका और जो सोचने का, सबसे बड़ी बात है जो शिव आनंद दुबे जी ने सोच के बनाया, ये बहुत ही एक तरह से बहुत ही अमेजिंग है। तो मैं इसके लिए सभी को, पूरे ग्रुप को, इनके पूरे क्रू मेंबर्स को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, और आशा करता हूँ आगे भी ऐसे ही चीज़ें लेके आप लोग आते रहेंगे। तो जैसा कि ये भजन आप लोग कल से सुनने को आप लोगों को मिलेगा। ये भजन अमित सागर जी ने और अमित उपाध्याय जी ने इसको गाया है, जो कि मैंने सुना, मैं लगातार अभी भी गाड़ी में चलाते हुए जाता हूँ, चलाते हुए आता हूँ। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कर्णप्रिय है, और जो इनकी अमित सागर जी का निर्देशन है और जो उन्होंने इसमें प्रयास किया हुआ है, वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और इसके लिए उन्हें और अमित उपाध्याय जी को दिल से बधाई, इसमें कोई संशय नहीं है। और शिव आनंद दुबे जी को रियल में इस काम के लिए उन्हें बहुत बहुत साधुवाद। उन्होंने इस में प्रयास किया, इसके बारे में सोचा, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ इससे हमारे लोगों को प्रेरणा मिलेगी, हमारे और भी जो यंग जनरेशन है, जो आगे आने वाले पीढ़ी है, वो लोग इससे सीख लेंगे और ऐसा काम करने में अपनी रुचि दिखाएंगे, अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। आपको पुनः दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद। As a diaspora myself, I really feel the importance of promoting cultural languages and our mother tongue in a foreign country, because there is a very high chance that all of these young people will be feeling disconnected from what is their roots, what is their tradition, and what our guest Mr. Shiv Anand Dubey is trying to do and establish in our community is very, very crucial and important, because if we do not have these kind of content for the younger generation, there is going to be a time where everybody is going to feel disconnected from one another. Along with that, our relationship with our elderlies in our community is also going to deter and go from bad to worse. So it's a very good initiative taken by the team, and Indusai News team is very, very proud to host them. So once again, I'd like to thank Mr. Shiv Anand Dubey for taking out his time for our exclusive interview. And the devotional song will be releasing very soon. So I hope our audience will be interested in hearing it as well. Even our CEO, Mr. Pawan Kumar Mishra, made a cameo in this video to promote the video. So I hope that this video and this audio is going to really, really benefit our audience, and you are all going to enjoy as well. Thank you very much for joining us. This is Sanjana Timsuna for Indusai News signing off. Thank you. Namaste.